नमस्कार दोस्तों। तो आज एम्बर हर्ड और जॉनी डेप केस के आखिरी हफ्ते का आखिरी दिन था। दोनों पक्षों ने इन 7 हफ्तों में अपने पक्ष में जो भी वाद विवाद किया था और सबूत दिए थे, उन सब की 2 फाइल्स बनाई गई। इन 2 फाइल्स को जज ने पूरा मामला सुनने के बाद अब जूरी मेंबर्स के हवाले कर दिया। दोस्तों, आज इस फाइनल डे में दोनों पक्षों ने अपने आज तक के सारे डिस्कशन और डिसीजंस को जज के सामने पूरी ताकत से दोबारा दोहराकर अपने अपने पक्ष रखे। जहां एम्बर हर्ड के वकील ने जॉनी के पक्ष को कमजोर करने के लिए एम्बर की दुख भरी ट्रेजेडीज को जज के सामने रखा और कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ही गंभीर विषय है और अगर एक बार भी एम्बर के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो ये केस उनके पक्ष में जाना चाहिए। वहीं कैमिल वास्केज ने आज जो धुआंधार प्रहार एम्बर के झूठों और जॉनी के ऊपर उनके आरोपों की गंभीरता 2018 से आज तक लगातार बढ़ा चढ़ाकर बताने की बात पर जो उनकी निंदा की। कैमिल ने कहा कि जॉनी अपने ऊपर हुए शारीरिक और मानसिक शोषण व हिंसा को शुरू से ही समान शब्दों में बताते आए हैं और बिना कोई बदलाव किए बड़े ही खुले रूप से उन्होंने इस केस में भी अपनी टेस्टिमोनी दी है। खैर, दोनों की क्लोजिंग स्टेटमेंट्स हुई और जज ने इन फाइनल शब्दों के साथ धन्यवाद करके आज कोर्ट को विदाई दी। Members of the jury, this is an important case to both the plaintiff and the defendant. In order to reach a verdict, each of you must agree on that verdict. In other words, your verdict must be unanimous. The first thing you should do when you go back to the jury room is to select a presiding juror. The role of the presiding juror is to see to it that the deliberations are conducted in an orderly and businesslike manner, that they are conducted only in the jury room when all the members of the jury are present, and that each juror has the opportunity to fully and fairly express his or her views. You have a duty to consult with one another and to deliberate with the objective of reaching an agreement, if it can be done without offending your individual judgment. Each of you must decide this case for yourself, but only after an impartial consideration of the evidence with your fellow jurors. In the course of deliberation, a juror should not hesitate to re-examine his or her views and change his or her opinion if convinced it is an error. However, none of you should surrender your honest conviction as to the weight or effect of the evidence solely because of the opinion of your fellow jurors or for the mere purpose of returning a verdict. In the jury room, you will have the exhibits that were entered into evidence. You will also have the instructions of law that I just read to you, and you will have the verdict forms. You'll also have a laptop, and that laptop will have just 2 files on it, and Deputy Lusa will set it up for you in the jury room. One is the plaintiff's files for audio and video files, and one's the defendant's files for audio and video files, and you'll be able to hear and watch those as well, the ones that were submitted into evidence. During your deliberations until you are discharged from jury service, you must not communicate with or provide any information to anyone who is not a member of this jury by any means about this case. You may not use any electronic device or media to conduct any independent research about this case, the legal or factual issues in the case, and the individuals or attorneys involved in the case. You are not permitted to consult dictionaries or reference materials, search the internet, visit websites or blogs, or use any other tools to obtain information about this case or to help you decide the case. Do not try to find out information from any source outside of the testimony and the exhibits received as evidence during the trial. You will also have, I know the attorneys discussed briefly about the verdict forms. You'll have 2 sets of verdict forms, one for Mr. Depp's case and one for Ms. Heard's case, okay? Now, when you have these verdict forms, the first 3 pages of both verdict forms have each of the statements separately. Okay, so when you're going through it, you're going to look at each statement separately and answer the questions that are on the page, okay? When you do come to a verdict, make sure the foreperson signs it and dates it, and then just let the deputy know about that, okay? Thank the attorneys and litigants for the kindness and the great demeanor you've shown to my staff and to the courthouse staff and to the deputies in the sheriff's department. I really appreciate it. It means a great deal to me, okay? And I also appreciate Judy because she's a rock star, okay? So, yes. Thank you. Well, that's a first, okay. दोस्तों, जज ने एम्बर और जॉनी केस में दोनों की एक फाइल बनाकर सारे फोटोज, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और गवाहों की टेस्टिमोनीज को अटैच करके एक लैपटॉप में डाला है जो जूरी मेंबर्स को दिया जाएगा। जज ने जूरी को हिदायत दी है कि एक बंद कमरे में जूरी मेंबर्स इन दोनों की फाइल्स पर डिस्कशन करेंगे बिना किसी बाहरी दबाव या व्यक्तिगत भावनाओं के। निष्पक्ष रूप से इन दोनों के मामले को डिस्कस करके व अच्छी तरह से देखकर ही जूरी को अपना न्याय करना होगा। जज ने कहा कि यह केस बड़ा ही सेंसिटिव है और इसका दोनों पक्षों की जिंदगी पर गहरा असर हो सकता है।
अपनी फाइनल स्पीच में जज ने दोनों पक्षों की सराहना की और यह कहा कि वो समझती हैं कि अपनी जिंदगी के कड़वे सच बयान करना आसान नहीं रहा होगा। अंत में सबका धन्यवाद करते हुए उन्होंने कोर्ट से विदाई ली। तो दोस्तों, इस तरह 7 हफ्तों से चल रहे इस सेंसेशनल केस की आज सुनवाई खत्म हो गई है। हमें आशा है कि जूरी अपने पूरे अनुभव और ऑब्जर्वेशन से इस केस पर अपना न्याय सुनाएगी और पीड़ित को न्याय व दोषी को सजा मिलेगी। दोस्तों, आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे वीडियोस को बेहद प्यार दे रहे हैं। इस बात से जॉनी के फैंस का प्यार दिखाई दे रहा है कि वो इस केस को कितनी बेसब्री से फॉलो कर रहे हैं और एक एक चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। दोस्तों, यही चीज़ इंसान ज़िंदगी में कमाता है। पैसा तो कभी आता है कभी चला जाता है, लेकिन दर्शकों का प्यार ही एक व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी कमाई होती है। जॉनी ने अपनी फिल्मों में काम करके पूरी दुनिया में जो जगह फैंस के दिल में बनाई है वो शायद ही किसी अभिनेता ने बनाई हो। आप सब खुश रहें और अपना ख्याल रखें। किसी और वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार।